Hello, good evening, everyone. A very warm welcome to all of you in the grooming session AK Pageant Dream Aura India 2026. I am Asha, team from AK Pageant. First, I would like to welcome our respected founder, Guddu Qureshi sir, and Ma'am Radhika Khanna. It's an honor to introduce Ma'am Mrs. Radhika Khanna, associated with Femina Miss India, known for her excellence in communication and uh, personality development. Hello. Hello. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, please start. Good evening, everyone. Thank you so much for that wonderful introduction. How are you, girls? We are fine, ma'am. Thank you so much for asking. Please turn on your cameras. Let's see all the beautiful faces. All the others, I'm still waiting. Please turn on your cameras. Hi, ma'am. Hi, good evening, good evening. Good evening, This ma'am. Yeah. I am not going to start the session until all the cameras are turned on. मैम आप मुझे देख सकते हो मैं क्या दिखाई दे रही हूँ आपको I really don't know कौन बोल रहा है. वर्ण वर्ण मुखर्जी Mm, yes, नहीं yes, I can see you. Others, quickly at the count of 5, 4, 3, 2, 1. Come on, come on. Some are wearing sashes also. Wow, Yes, ma'am. interesting. Yes, ma'am. We were asked to, wear this sachet every time when we were supposed to be in the meeting. So I have that. Nice, nice. That's nice. So, the main reason for you all to turn the camera is also presence. You understand what presence is all about. If your camera is not on, you will not feel confident. That means you want to hide yourself. It's a psychological impact. So, even to make you understand that it's very, very important for a pageant to be confident and right away turn on the camera so that you gain more confidence. Yes? Yes or no? Yes, कैमरा से yes. कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता है बढ़ता है ना आता है आता अदरवाइज खड़े होके कैसे बोलोगे आप राइट और नो है. Right, ma'am. Yes, ma'am. Right. यस so to begin the session with first and foremost I would like to ask each one of you, do you remember anything, any three things? Take 2 minutes and write them down that you remember from the previous session that I took of yours. We have to write it, ma'am. Yes. Write down or go back to your notes and see three things that you would like to share with me. Three important learnings for you, topmost learnings from your previous session that I took of yours. Note it down. Done, everyone? Yes. Yes. How many people have joined today? 26. I can only see 15, 16 cameras on.
So I'll ask Mannat, can you unmute yourself and share your 3 top learnings? I'm just going to pick up 4 or 5 people just randomly, okay? Mannat from last time. Ma'am, actually, I was not present in your last class. You missed it. Yes, ma'am. Oh, okay. Who else can I? Harshita? Yes, ma'am. Why is pageantry important to us? Like last time, you have given this as the first question. Okay. I So I have thought that pageantry, it's not like important, but then it's just to show ourselves to the people that also women can do it. Okay. But last time we did not get into question answers, so I'm just wondering. No, you just like at the last when someone asked the question, you said this as the answer. Okay. Yeah. Anybody else? Niharika, do you remember anything from last time? Good evening, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. Listening is important and body language matter and Very good. sound of words and pitch of voice also matter in communication skills. Excellent, excellent. Good, good, good. This shows you were present, alert, and you've imbibed the learning. Excellent. Thank Anvi, you, ma'am. you're welcome, dear. Can you unmute yourself? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. right pronunciation of words, confidence, Excellent. and before you answer anything, you should think first for 2 minutes. Excellent. Great, great. Thank you. And something now, the last person I'm picking up is Yashasvi. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, you have told us about how to difference between fake smile and genuine smile, and also Excellent. how to hold the mic like in it should be like in the distance of 4 fingers and 45 degrees. Absolutely. Excellent, excellent. Uh, Clap for yourselves, all the people who've understood and imbibed the learnings. I'm very, very impressed with each one of you. Also, before we start the session, okay, today's session, it's very, very important that you have some questions to answer. You need to be a curious mind. Mind में थोड़ी curiosity लाओ. Session से पहले आपको excitement होनी चाहिए थी कि okay, today I'm going to learn something and I'm going to clarify my doubts. So if you can take 2 minutes to write down any doubts you have, we will not take them now. I will take them at the end of the session. Okay? Quickly take 5 minutes and write down any doubts you have in mind related to either dressing, either I'm going to cover quite a bit about a lot of things today, but either dressing, it can be either about speaking, your confidence, your stage presence, anything. Okay? Just make a quick note. Any one question, if each one of you have, please note it down. Ma'am, can I take a moment? Yeah. एक्चुअली मुझे अनाउंस करना था, अभी हमारे जो फाउंडर है गुरु कुरैशी सर, उनका मैसेज आया है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी अपना सैश पहन के बैठे, सभी को मार्किंग मिलेगी 10 मार्क्स तो होते हैं। जो मैम है वैष्णवी खातून वो भी देंगी और सर भी देंगे। ये है जो आपको कहने के लिए कही गई है, तो आप सभी नेक्स्ट टाइम से चीज को फॉलो करें, राइट? Ma'am, those have a low sachet, so what they can do? I didn't receive yet. फीस पेंडिंग है तो वो अपनी फीस पूरी कर लीजिए, ठीक है? फिर आपका भी सैश आपको दे दिया जाएगा, आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा। I already paid all money. I paid all. ओके, तो अभी थोड़े दिन में आपका फिर आपके घर तक आपके पास पार्सल आ जाएगा। Okay, thank you, ma'am. सैटरडे संडे है, इसीलिए थोड़ा वीकडेज वीकेंड्स होते हैं, तो मंडे तक आपको मिल जाएगा। Okay, ma'am. Thank you. Okay. Now let's go ahead with the session. Fine. Any questions you have, please, again, I'm doing the context setting.
Please keep them for the end. End में when I'll ask you for the questions, then please raise it. बीच में do not unmute and keep speaking unless I ask you to unmute so that I get an understanding. Okay? Thank you. Please mute everyone. Now let's come to who's this? Everybody should know this, huh? Who is this? Sushmita Sen and Aishwarya Rai. Sushmita Sen and Aishwarya Aishwarya Rai. Rai. Miss World and Mrs. Universe. Mrs. World. Yes, whatever Miss written, Palestine. your presence speaks 1,000 words. Share with me one person you admire the most, or somebody you aspire to be like. Okay? Done? We'll take a few people, okay? Preeti, can you unmute and share? Hi, ma'am. Good evening, how are Good you? evening. I'm very fine, ma'am. Thank you so much for question. Actually, I admire Priyanka Chopra a lot. She has done Okay. so much in her life, starting from her young age when she was, very young. She was in America, right? And she was studying over there in spite of the fact that she was, because of her color, she was said some, she had already said that I am not feeling well because of that. They were color oriented. And after that, she again came back to India. She took part in Miss World and she became Miss World. And after that she has changed quite a lot. She joined in movies, and there in movies also she had, because of her color. And so many people, I have heard that they were against her, and so they have gathered, but then again she got her strength and she went to Bollywood. And see what she is doing now. She is, uh, so inspiration to each and every girl in India, and the women as well, because she has done so much of things. She has into acting, she has done wonders. And whatever, who are the people who were, in India, they were like, isko nahi lena hai film mein. They are the ones, they are thinking that no, she could have acted enough films. And so in beauty, in her marriage life, in her being a mother, and the way she carries India co, amazing, ma'am. Amazing. I just can't say how much I admire her. She is Yes. true inspiration to me. Thank you. Thank you. So I would Okay, like ma'am. each one of you to remember one more thing. When anybody, unmutes, or when anybody is talking, if I'm saying, Preeti, please unmute and speak. So you will not say hi, okay? Because you must remember you are here for something official, okay? It's not only limited to Preeti, it's for everybody, I'm saying. Because everybody says hi. First, you will greet with good Good evening, good evening. Good afternoon, evening. okay? Okay. Yes. Point noted, ma'am. Then Sorry you for will that. say, no, 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 you don't need to be sorry. It's just that you're not aware. Now you've gained the awareness. So please, not only just for the sessions, in general, you should always, anything official, you have to first say good evening, good afternoon, and then speak. Okay, instead of hi. Hi only is for friends or people around. You see, even in pageantry, they don't say hi and they start speaking.
They'll wish you good evening, ladies and gentlemen, or they'll say something else, right? So something that is a little formal compared to something that is a little informal. Okay? Now, tell me one thing. Who's pretty out of the two, Aishwarya Rai, Miss Aishwarya Rai, or Miss Sushmita Sen? Out of the two. Anybody can unmute and speak. We are talking about physicality, physical looks. So much of time. Yes, Ma'am, you just have to look at the picture and answer. both of them were so pretty, but they both have their own identity. She has her other qualities, and both of them, they are totally different from each other, but still they are carrying their own personalities, which speaks for them, and that's what looks like. But Aishwarya Rai was taken as one of the top beauties in the world, right? Her name comes, Miss Sushmita Sen's name does not come in the topmost beauty in the world. We are talking about physicality, physical aspect. Okay. So Aishwarya Rai was much better looking than Sushmita Sen when it came to just looks, physicality. What I'm trying to explain here is in pageantry, हमेशा looks ही नहीं win करती हैं. If you see why Miss Sushmita Sen won, the crown for Miss Universe over Aishwarya Rai Bachchan was just her presence. So your presence speaks 1,000 words. The way you carry yourself, your confidence, the way you stand up and speak. Okay, all that matters. So when we talk about all about our ABCDE we did last time, yes, you have to focus upon each aspect, especially your paralinguistics that we did, pitch, tone, volume, word stress. Okay, put stars around that. Next to it, put stars so that it stays in your head. When you are there on the stage, your presence speaks about you more than just your looks. Okay, looks of course do count, but they are just one aspect of the pageant. ब्यूटी पैजेंट का मतलब यही नहीं कि बस ब्यूटीफुल दिखना है, ब्यूटीफुल होना है, ब्यूटीफुल बोलना है, और ब्यूटी को डिफाइन करना है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन लाइफ with the crown. That's very, very important. Everybody, I hope everybody is understood. Now let's talk about your journey, your goals. Starting from today, I'm giving you a step-by-step process that you need to follow, okay? So that your journey becomes even better before the actual day. Let's talk about leadership presence. Even on stage, you need to be like a leader, stand tall, stand different from the rest of the crowd. Okay. The first and foremost is the power stance. What is it? The power stance. Please note it down. Power stance क्या होता है? You take your hands and place them on your hips. Hips पे place करोगे hands. Okay. Like this. Can you see how I'm doing? Okay. या सुपरमैन पोज होता है, ना सुपरमैन का भी ऐसा ही पोज होता है. Same like a Wonder Woman, you put your hands on your hips, okay, and you will stand. Now what this does is it releases your what hormones? Tell me. Confidence hormones. क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस कैसे अनलीश होता है? When you place your hands and change your posture, okay? Yeah, the male hormone gets released in the body. उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. So you need to make sure before you get onto the stage, you stand in a power stance. Everybody, सबको समझ आ गया? सुपरवुमन पोज में खड़े होगे. Okay? Then next comes the pause and pace drill. Pause and pace का मतलब है when you're speaking or when you're moving on stage. आप भागोगे नहीं स्टेज पे. You will pace, है ना? Consistency maintain करना with your walk. That's very, very important.
Also in pageantry, I hope all of you are practicing your walk. Walk regularly practice कर रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे? Yes, ma'am. Please practice regularly because जब आप स्टेज पे खड़े होते हो, then the male hormone will be activated even with your confident walk. So do not forget to practice, otherwise आपका mind drift होएगा. Instead of staying on answering the question, you will keep thinking about your clothes, about how you're walking, how you're looking. Instead of focusing on all the other areas, अपने सारे areas को पहले ही cover कर लो, so that on the final day you are only focused on answering really well and making your presence felt in front of the judges. Okay? Now let's talk about another very important aspect of pageantry. It's called the eye contact triangle. Eye contact triangle क्या होता है? All of you, please keep noting it down. These are very, very important aspects. Eye contact triangle तब होता है जब आप स्टेज पे खड़े होते हो with the mic in your hand and you're speaking. Instead of just keeping your eyes stuck at one person as if you're staring, you have to make your contact from left side. सबसे पहले left में देखोगे when you're speaking, then right side, and then you come back to the center with your eye gaze. सबको समझ आ रहा है? See, I'm talking, I'm looking at the left first. I've made a contact with people on the left. Now I'm looking at the right side. I've made a contact with people on the right side. And then I'm making a contact with people in the center. Center में कौन होगा? सारे judges होंगे. So very, very important to remember the eye contact triangle. Got it, everyone? Now let's come to the next one, which is command with gestures. Command with gestures मतलब whenever you're trying to emphasize a point, एक hand से तो आपने mic पकड़ा है, दूसरे hand से उसको emphasis दो when you're talking, and don't overdo your hands जैसे अब मैं कर रही हूँ. Make sure it's softer, trying to recall a time, then you go back like that or go back like that. उससे क्या होता है? आपकी body language भी power play करती है. Not only your words are meant to play. Okay, your body language also is extremely important. We discussed, right, how much percentage of body language of communication is through body language? Come on, girls. 55%. Excellent, 55. Alina. Excellent. Very good, very good, very good. Yes. 55% of socho, it is more than anything. So make sure your body language is key. Okay. वॉइस एंकरिंग एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. इसमें क्या है? यू विल रीड 3-4 लाइन्स और 4-5 लाइन्स एवरी डे, जिसमें आप क्या करोगे? डिफरेंट टोन सेट करोगे. एक टोन है न्यूट्रल, एक टोन होगी एनर्जेटिक, और एक होगी वेरी इंस्पिरेशनल. ओके, न्यूट्रल क्या होगी? व्हेन यू आर टॉकिंग नॉर्मली you maintain the same pace, that is neutral. Energetic means full of excitement, you know, this is how it happened. So usse kya hai? You will be able to focus on neutrality, energizing, or inspirational talk. Inspirational kya hai? When you're talking about somebody's story during the question hour, or you're talking about your own story, uska alag tone hoga. So emotion feel hona chahiye when you're speaking. Is it energetic? Is it neutral? Is it inspiring? Okay? वॉइस में खनक होनी चाहिए. अगर आप सिर्फ वर्ड्स बोल रहे हो और उसमें पैरालिंग्विस्टिक्स नहीं है, पैरालिंग्विस्टिक्स से क्या होता है? इमोशन फील होता है ऑफ अ पर्सन. If you're telling a sad story, if you don't have the face expressions, if you don't have this word stress, तो लोगों को कैसे फील होगा that you're talking about something emotional? Yes or no? Similarly, energy देनी है. If you're talking about something very exciting, then there has to be energy. तो आपका emotion feel होना चाहिए. Is the emotion neutral, energetic, or inspiring? Okay? So practice. Practice is the key. Now presence freeze frame.
ये क्या होता है व्हेन यू आर ऑन स्टेज, एंड में whoever wins the crown, you don't know how to बी ऑन स्टेज, बेसिकली बिहेव तो नहीं बोलूंगी, हाउ टू बी ऑन स्टेज। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस इट बिफोर हैंड दैट यू रिसीविंग द क्राउन, एंड हाउ आर यू गोइंग टू पोज। एक पोज अपना सेट कर लो, वो फ्रीज पोज कहते हैं, दैट मीन्स यू सेट द पोज, गॉट इट। सो एक अपना पोज सेट कर लो कि मैं ये पोज है वो करूंगी इफ आई विन द क्राउन। ओके, पोस्चर कैसा होगा, स्माइल, I will smile with gratitude and thankfulness. Eyes होंगी forward होनी चाहिए. I should bend my head a little. All those things need to be there. Practice even receiving the crown. That's very, very important. A lot of people miss it. फिर end में then they are lost and confused and उनकी presence feel नहीं होती when they are winning the crown. Okay? So make sure you follow all of them. अब माइक मोमेंट्स पे क्या होता है, माइक का वी ऑलरेडी डिस्कस की डिस्टेंस पूरा होना चाहिए। यस, माइक में आपकी आवाज की खनक होनी चाहिए, और व्हेन यू डिलीवर एन आंसर यू नीड टू पेस द आंसर वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आंसर पेस्ड हो, डोंट रश, बिकॉज इफ यू रश थ्रू एन आंसर द जजेस विल ऑटोमेटिकली नो कि इसको आंसर नहीं आता है या ये घबराई हुई है, सो शी इज रशिंग। ठीक है, रश मत करना अपना आंसर, प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरह कर लो कि आप एंड में आंसर कर पाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। गॉट इट? नाउ दिस इज, प्लीज एवरीबडी पे अटेंशन टू दिस। ये आपको कोई पैजेंट में नोबडी विल बी एबल टू टेल यू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फियर। हमारी लाइफ में फियर कैसे होता है स्टेज पे, एंड पीपल कैन नॉट आंसर। ओके, देर इज समथिंग कॉल्ड एज अमिगडला हाईजैक। देखो इसमें मैंने लिखा भी हुआ है, व्हाट इज एन अमिगडला हाईजैक। ओके, अमिगडला हाईजैक क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज एन अमिगडला हाईजैक? एनीबडी? नो? हमारे ब्रेन में एक छोटा आमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? आमंड शेप, प्लीज नोट डाउन, स्ट्रक्चर होता है, विच इज द थ्रेट डिटेक्शन सेंटर। लिखो उसके आगे, थ्रेट डिटेक्शन सेंटर, जो थ्रेट को डिटेक्ट करता है और हमें थ्रेट से पहले ही बताता है कुछ होने वाला है डेंजरस, और वो फियर क्रिएट करता है। When we go on stage unprepared, ये अमिगडला एक्टिवेट हो जाता है and it hijacks or shuts the prefrontal cortex. Prefrontal cortex क्या होता है? हमारा ब्रेन में एक रीजनिंग सेंटर होता है जिसको अमिगडला शट कर देता है। इससे हम लोग सोच नहीं पाते, वी कैन नॉट रीजन आउट एंड वी कैन नॉट आंसर। ओके, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो पूरा, आपको यू डोंट नीड टू नो द साइंस बिहाइंड इट, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया है। तो अब क्या होता है, अगर हमें फियर नहीं करना है स्टेज पे और अमिगडला हाईजैक नहीं हो हमारा, कि हम घबरा जाए एंड वी फॉरगेट। होता है ना, हम कभी कभी एग्जाम के लिए जाते हैं, बोलते हो गॉड आई न्यू आई प्रिपेयर्ड सो वेल, बट वहां जाके सब भूल गई। होता है ना, कुछ याद नहीं आया आंसर क्या लिखना है। वो क्यों होता है? बिकॉज हमारा अमिगडला हाईजैक होता है। सिमिलरली व्हेन यू गो ऑन स्टेज एंड यू आर स्पीकिंग एंड यू फॉरगेट एन आंसर, इट इज बिकॉज अमिगडला हाईजैक हो गया है, योर रीजनिंग सेंटर शट्स डाउन। Now, what to do so that your reasoning center does not shut down on the actual day is what I'm going to talk about. Okay? ये देखो, जब स्पॉटलाइट आती है एक इंसान पे, तब अमिगडला एक्टिवेट हो जाता है कि ओ गॉड कुछ थ्रेट होने वाला है, बिकॉज इट इज अ टेरिटरी यू हैव नॉट वॉक्ड अपॉन। कुछ नई चीज करने जाते हो, आप डर जाते हो ना, पता नहीं कैसा होगा, बिकॉज अननोन टेरिटरी, तभी अमिगडला हाईजैक होता है। अब
स्पॉटलाइट में आप ना डरो और खड़े होके कैसे प्रॉपर्ली आंसर करो व्हेन यू आर ऑन स्टेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, कैन यू ऑल रीड? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सो दैट आपका अमिगडला हाईजैक नहीं हो. लास्ट टाइम किसी को याद है कि मैंने आपको एक दो एक्सरसाइजेस बताई थी दैट यू शुड डू टू प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन आंसर्स? किसी को याद है क्या बोला था मैंने? Fish bowl exercise. Excellent, Yashasvi. You have my heart today, huh? All answers. Good, good. Yes, it was the fish bowl exercise that I gave you all. Wear your gowns, okay? I'm giving you a very, very good way so that आपका amygdala hijack now, you don't freeze on stage and you can answer with a lot of confidence. I have used this process with Miss India, Miss Universe, Mrs. India, Mrs. Universes, everywhere. All the 8 to 10 pageants that I train in, सबको ये सिखाया, and all my students have gained a lot out of this. Okay, आपने क्या करना है? You will wear your gown. Take out 10 minutes every day to practice this regularly before your main day. Fish bowl में questions आपको बताना डाला था मैंने. Yes, you will wear your gown. Think of holding a mic in front of a full view mirror and खड़े होके pick up one chit, open it out, read the question and then say thank you for the question. जैसे judges को आप बोलते हो thank you for the question. Try and give an answer for it. Okay? Try and speak. आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप घर पे ही स्पीक नहीं कर पाओगे तो मेन डे पे कैसे करोगे? लोग बोलते हैं अरे we'll do. I had a student who I was training separately one-on-one. She reached out to me from the Miss Universe pageant. And I kept telling her, I am telling you, and she's drop dead gorgeous, very pretty girl. She's come second. I don't want to name her because, it's not nice to name her. So, but the thing with her was थोड़ी जिद्दी थी. I kept telling her, your question answers are weak. No, ma'am, I know my question answers. आप मुझे बाकी चीजें कराओ. I know. She went on stage and question कुछ था, उसने answer कुछ और दे दिया. So your teacher or your coach or your guide knows आप में क्या क्या कमियां हैं. So you have to trust. Today, if I'm a trainer, I've trained people for almost 20 years. तो you think मुझे knowledge नहीं होगी कि क्या क्या gaps हो सकते हैं या क्या क्या लोग miss करते हैं during pageantry. So this is a very, very important aspect. Please don't miss it because I want all of you to give it your best and emerge as winners. तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे बस सुंदर लगूं, अच्छा गाउन पहनूं, अच्छा मेकअप, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. योर कॉन्फिडेंस and the way you stand up and speak is going to make a vast impression on the judges. So please take it very seriously, okay? Everybody promise yourself, forget promising me. Make a promise to yourself that yes, I am going to take out 10 minutes to practice at least 1 or 2 questions ke answers every day until the day of the pageant. So that when I go on stage, mera amygdala hijack na ho, fear create now, and I can answer with a lot of confidence and poise. Got it? Overcoming nervousness and stress. Now, time and stress are correlated. Okay, I will not give you a full training on time and stress because that is for corporates. And it's a very long session. It's a full day session. But मैं आपको basics बता सकती हूँ. अगर आप time नहीं manage करोगे आपका until the day of the pageant, आपको stress होगा. Even during the pageant days, please manage your time well. Make sure you set an alarm or you set a planner and put everything in order so that end day pe you're not lost. Okay, that's extremely important. So prioritize with a planner. Break tasks into must do. Prep, fitness, सबका टाइमिंग सेट करो कि इतना टाइम में फिटनेस को दूंगी, इतना टाइम. प्रॉपर टाइम टेबल आपका या प्रॉपर प्लानर सेट होना चाहिए. अब 2x2 मैट्रिक्स हम लोग कॉर्पोरेट्स में सिखाते हैं. अर्जेंट वर्ड्स वर्सेस नॉट सो
urgent tasks. Okay? ठीक है? सबसे urgent tasks हैं that require your full attention, जिसमें आप weak हो, उसको strengthen करने के लिए, which is all about body language, question answer round. Focus on those tasks every day. अपने 3 टॉप मोस्ट टास्क लिख के रखो, क्या होंगे या क्या होने चाहिए, दैट आई विल फोकस ऑन. द फर्स्ट half of the day your focus should be on those tasks. माइक्रो स्केड्यूलिंग कर लो, दैट मीन्स 3-3 आवर्स का ब्लॉक मत बनाओ, 30-30 मिनट्स का आप ब्लॉक बना के लेके चलो, देन यू वर्क बेटर. हम कॉर्पोरेट्स में भी सिखाते हैं, लेंदी वर्क आवर्स डू नॉट हेल्प. बीच में ब्रेक लो, 30 मिनट्स का कुछ करो, फिर छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर 30 मिनट्स का. दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू. ओके? First hour of your day, you should think of speech, question, answers, fitness. That is how your day should begin. अच्छा, जिसको नहीं समझ आता प्लानर कैसे करो, एक होता है ऐप कलर नोट, दैट इज ऑन सैमसंग. कलर नोट या नोशन, वो भी एक ऐप है. दोनों में से डाउनलोड करके उसमें पूरी प्लानिंग अपनी कर लो और 3 टास्क हाईलाइट करो फॉर द डे. दैट इज अ मस्ट डू फॉर यू. गॉट इट एवरीवन? स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स. स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे? कैन एनीबडी टेल मी एनी मेथड्स टू मैनेज स्ट्रेस बिफोर द मेन डे? Ma'am, that breathing method we can that breathing method जो हम लोग यूज करते हैं कि 3 बार सांस लो 4 बार छोड़ो, वो कुछ होता है. मैंने आप क्या बताया था लास्ट टाइम? डू यू रिमेम्बर गरिमा? You told us that if you are going towards the stage, you can shake your body behind, थोड़ा सा energy level तो हो जाता है, तो then you will feel confidence on stage. एक ये point भी था. Very good, Preeti. Anything else you all remember? Yes, Niharika. Ma'am, superwoman pose. Superwoman pose, very good. What else? Think as Ma'am, of you are already a winner. Think you already a winner, but how do you manage stress? स्ट्रेस को मैनेज करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं? चलो नोट डाउन. नंबर 1 इज बॉक्स ब्रीदिंग मेथड. व्हाट इज इट? बॉक्स ब्रीदिंग. बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है? आई एक्सप्लेन टू यू लास्ट टाइम, यू ऑल फॉरगॉट. Breathe in for a count of 4, hold for a count of 4, and exhale for a count of 6. 4, 4, 6. Do it 3 times before you step on the stage. Okay? घर में भी जब स्ट्रेस होता है, you can apply it. It's excellent. The box breathing method. Anchor rituals. That means कुछ भी अपने affirmations regularly करो या visualization करो that you are a winner. It gives you confidence and it makes you very sure that you will win. Stop comparing yourself to others around you. Don't think, oh, वो ज्यादा सुंदर लग रही है, मुझे तो लगता है वो जीत जाएगी, वो जीत जाएगी. No. Nobody knows who's going to win. You have to give it your best. That's what matters. Digital detox करना है so that you don't stay stressed and you're fresh every day. What is that? That means 1-2 hours off the phone or social media daily before you sleep. Very, very important so that your mind is stress free, especially during those days when you're going to be on stage. Digital detox बहुत important है. Movement breaks लो. बीच में क्या होता है movement breaks? Anybody? Yoga, any sort of dance, okay, any sort of movement
मूवमेंट से क्या होता है, आपकी बॉडी की एनर्जी रेज होती है. इफ यू मूव और जस्ट स्टैंड अप एंड क्लिक योर फिंगर्स, क्लैप, एनीथिंग, इट गेट्स इन यू इनटू द जोन. ठीक है ना? एंड योर एनर्जी रेजेस. सो एनर्जी रेज करने का बेस्ट मेथड है ये. नाउ इफ यू हैव अ लॉट ऑफ फियर और नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड, उस माइंडसेट को स्विच करने का बहुत इंपॉर्टेंस है बिफोर. बिकॉज पहले ही अगर आप सोचोगे, आई मेंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, if you think you're going to lose, you're right. If you think you're going to win, you are right. समझे ना? मतलब माइंडसेट इज द की. अगर माइंडसेट से ही आप सोचो कि आप जीतोगे या हारोगे, उसी हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस होगी और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा. So make sure your mind is extremely positive and be very sure. Imbibe the personality of any person you look upon. What does that mean? अगर मैं सोचूं कि सुष्मिता सेन होती, how would she perform on stage? And then I close my eyes for 2 minutes and smile like her, think of walking like her on stage and all that. रोज वो पर्सनालिटी इम्बाइब करूंगी और उस पर वर्क करूंगी. इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ मी एंड गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिफोर आई स्टेप ऑन स्टेज. गॉट इट एवरीवन? Extremely important. The art of storytelling. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. I've included because pageants को कभी कभी पता ही नहीं चलता when they are telling about their inspirational story. Just give me 2 minutes. I just wanna have water. 1 sec, sorry. Sorry. So this is extremely important. Okay, the art of storytelling. Whenever we share a story, the story has a particular framework को यूज करके आप स्टोरी शेयर करते हो. स्टोरी बस ऐसे नहीं जाके अपनी स्टोरी, यू जस्ट स्पीक अ स्टोरी. It has to inspire people. It has to be relatable, something that makes sense. तो स्टोरी टेलिंग का फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. प्लीज ऑल ऑफ यू नोट इट डाउन. द 3 act फॉर्मूला. सबसे पहले हुक ऑफ योर स्टोरी. Start with a personal moment or strong line. You can note down something which is very, very easy. You can say, there was a time. Okay. There was a time, and then you can tell your story that I could not stand up and speak. I had a lot of stage fear. Okay. There was a time in my life when I could not. So there was a time, likh in near the hook. Heart of the message. What challenge did you face? That should be the second framework of the storytelling process. सबसे important है, you eventually will stress upon or highlight the fact that आपका end impact कैसे हो. जैसे, this is what I learned out of it. Okay. Yeah, if you're talking about your journey, there was a time I could not stand up and speak on stage. I had a lot of stage fear. Then I watched a video of, one of the inspirational personalities, and they said that storytelling is something that one can learn, or confidence can be built over a period of time. That is when I started giving myself a lot of confidence boost and started preparing various techniques to gain confidence. And eventually, I overcame the challenge within 3-4 months या जो भी आप बोलोगे. Okay, so there is a flow, connection होनी चाहिए. That means कड़ी जुड़नी चाहिए एक साथ to form a particular flow of the story. Got it, everyone? It should inspire people around you. Make sure it is relatable.
कि पीपल थिंक इट्स मतलब डोंट कुक अप अ स्टोरी, रियल एक्सपीरियंस ही शेयर करना, बिकॉज रियल एक्सपीरियंस से रिलेटेबल कुछ नहीं होगा. देर आर टाइम्स व्हेन समबडी शेयर्स अ स्टोरी एंड यू थिंक अरे मेरे साथ भी ये हुआ था. दैट इज द फीलिंग इवन द जजेस शुड गेट. हाँ, दिस इज समथिंग दैट इज देयर, दिस विल रेजोनेट विद ऑल द पीपल अराउंड. ओके, तो जेन्युइननेस स्टोरी टेलिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Do not use very fancy words. Don't be a Shashi Tharoor कि thousands of different words use कर लिए डिक्शनरी से उठा के, बट मीनिंग तो किसी को समझ नहीं आया. Rather make sure that your story is relatable and it evokes emotion. That means judges का emotion, judges को feel हो सकता है. They can get emotional with a story कि yes, इसने actually ये challenge overcome करा है life में. But don't cook up a story, be genuine. That's very, very important. Now we talk about, make sure you add emotion, like I said, in the story. Stress on words. Stress on, like how I'm stressing, stress on words that create impact so that emotion feel ho sake through your story. Balance vulnerability with strength. Also make sure इतने soft ना हो जाओ कि सिर्फ vulnerable रहो, strength ही ना लगे story में. Make sure you throw your voice across. Enunciation or pronunciation समझाया था ना last time? Apply that. Got it, everyone? Yeah? Next time when we meet, I want you all to finish this. This is your homework. Each one of you will write a good story या अपनी story को ही करोगे. Make sure you follow this formula. Also, your answer should be within 1 minute. I don't know एक pageant का क्या है. You must find out from them. Answers कितने lengthy होने चाहिए. Usually it's for 60 seconds, not more than 60 seconds. Okay? You check with them accordingly. Each one will write a story and next time I will take some shares. Okay? Make sure your story is very well prepared so that you will thank me later अगर कुछ ऐसा question आया. It will work in your favor. Okay? Make it visual. ऐसी पिक्चर पेंट करो माइंड में जैसे होता है somebody is talking. आप देखते ना स्टोरी टेलर्स या आप कभी भी कॉमेडियंस को सुनने जाते हो, स्टैंड अप कॉमेडी ऑन स्टेज, दे पेंट अ पिक्चर. आप विजुअलाइज करने लगते हो, उनके वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं. पेंट अ पिक्चर मतलब असली में पेंटिंग ब्रश उठा के नहीं पेंट करते. पेंट अ पिक्चर इट्स एन इडियम व्हिच मीन्स दैट माइंड में एक पिक्चर पेंट हो जाती है. That's very important that when you're speaking, you create a picture in the minds of the judges. Tie it to the crown. Always link your story back to your values. हमारे values क्या हैं? पहले अपने values जानो. Each one will have different values. Confidence, resilience, compassion, leadership. जो भी आपकी value हो, अपनी story को उससे link करो. And that is how I gained my confidence, and today I'm standing on this stage like a roaring lioness ready to take up this challenge and win the crown. है ना? उसमें बात में दम होना चाहिए when you stand up and speak. So slowly अपनी story शुरू करोगे under confidence से. How did you build, क्या challenges आपने face करे and how did you build confidence, and that is how you relate it to your one of the values that you have. Got it, everyone? I'm not going to do the storytelling right now, but this is your homework I'm giving you, okay? Each one will write it down and next time definitely I will take it up. Now let's talk about image. Image means all about your body shapes. Whatever you wear should be according to your body shape. सबसे पहला है बॉडी शेप ट्रायंगल. ट्रायंगल बॉडी शेप क्या होता है? अगर आपके हिप्स ब्रॉडर हो और आपका अपर पोर्शन स्मॉलर हो तो ट्रायंगल फॉर्म करती है आपकी बॉडी. ओके, दैट इज अ ट्रायंगल शेप. ट्रायंगल शेप को कैसे बैलेंस करते हैं हम विथ क्लोथ्स? ट्रायंगल बिकॉज नीचे चौड़ा है तो हम ऊपर देखेंगे कि वर्क शुड बी मोर ऑन टॉप.
उससे अटेंशन सारी ऊपर की तरफ आएगी और ट्राइंगल बॉडी शेप बैलेंस होगा. I will explain you also how to find out your basic body shapes today. Okay? The second body shape is a rectangle. Rectangle body shape क्या होता है? अगर आप rectangle देखा है ना सबने, 2 sides are smaller, 2 sides are longer. Yes or no? Length is more than the width. तो वो rectangle shape होता है. अब rectangle shape को balance करते हैं. रेक्टेंगल शेप कैसे जानोगे? यू विल मेजर अबव द चेस्ट एंड योर हिप्स, उससे पता चल जाएगा रेक्टेंगल शेप है. और वेस्ट भी डिफाइन ना हो, कर्वेशियस वेस्ट नहीं होगी, तो वो रेक्टेंगुलर शेप बॉडी होगा. रेक्टेंगुलर शेप को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? दिस यू कैन अप्लाई इन डेली क्लोथ्स ऑल्सो. आप अपनी वेस्ट को डिफाइन कर दो. ये जो गर्डल है ना अराउंड योर वेस्ट, वेस्ट को एनहांस करो. जैसे आप लहंगा चोली पहनते हो तो वेस्ट एनहांस हो जाती है. It's a very good way to balance a rectangular body shape. Got it, everyone? Next comes inverted triangle. अब इसमें हमने बैलेंस करा था कि ऊपर में बोला था ज्यादा काम होना चाहिए तो बैलेंस आउट होता है. इसमें हिप से डाउन होना चाहिए वर्क, या इट शुड बी अ ए लाइन ड्रेस. ए लाइन मतलब ऐसे ए शेप में आए, ऐसे लाइक एन अम्ब्रेला एट द बॉटम, ऐसे वाली जो ड्रेसेस होती है, उससे आपका इन्वर्टेड ट्राइंगल बैलेंस आउट हो जाएगा. ठीक है? गॉट इट एवरीवन? दैट इज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल जिसमें आपका shoulders will be broader than your hips. That is a inverted triangle body. Next will Can be you repeat hourglass. for the rectangle one? Actually, Sorry? my audio got disconnected. Sorry? Ma'am, can you please repeat the rectangle one? My audio Yeah. got No problem, no problem. So in rectangular body shape क्या होता है? Your upper chest, okay? When you take a tape and measure your upper chest all around, circumference, and आपका hips, they will measure almost equal. That means you are a rectangular body shape. अब इसको enhance करने के लिए क्या करना चाहिए? To make an ideal body shape, आप क्या करोगे? इसकी waist define कर दोगे. Because ऊपर नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, it's already the proportion is balanced. सेंटर को आप इनहांस करोगे तो ऑटोमेटिकली वेस्ट पतली लगेगी, है ना? उससे ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस आउट हो जाएगा फिगर. गॉट इट? नाउ वी कम टू आवरग्लास. आवरग्लास इज द मोस्ट आइडियल. इट्स अ बैलेंस बॉडी शेप. इस पे ऑलमोस्ट सब चल जाता है क्योंकि अपर बॉडी भी बैलेंस्ड है, लोअर बॉडी भी बैलेंस्ड है. ओके, तो एवरीथिंग दैट इज प्लेस्ड ऑन इट, एनी क्लोथ्स विल सूट अ आवरग्लास बॉडी. And lastly, we come to a round body shape. Round body shape क्या होता है? जब आपका वेस्ट या आपका पेट बहुत निकला हो बाहर और पूरे राउंडी पाउंडी लगते हो, that is a round body shape. Nothing is really defined. Okay? इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप सेंटर ऑफ द नेक पे बहुत काम रखो. दैट मीन्स अटेंशन नीचे नहीं जाएगी. एम्ब्रॉयडरी वगैरह शुड बी, या ज्वेलरी नेक में खूब डली होनी चाहिए. उससे क्या है, आईज जो हैं ऊपर ही रहेंगी. योर आईज विल स्टे. somebody looks at you, they will see the jewelry piece first, or they will see what embroidery you have around the neck. Got it? जैसे हमारे कॉलर्स भी होते हैं, कॉलर्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, या हाइलाइट्स हो सकते हैं, शिमर हो सकता है. तो अटेंशन ऊपर ही रहेगी इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन टू द बॉडी. एवरीबडी यू गॉट इट? These are basic body shapes I'm sharing with you all so that you all can use it in future for yourself. अब इसको कैलकुलेट, मैम आपने सब सिखा तो दिया, अब कैसे पता चलेगा किसकी बॉडी शेप क्या है ना? यस प्रीति, मैम ने लेक्चर तो सब दे दिया. हाउ डू वी चेक नाउ व्हाट इज अ बॉडी शेप, है ना? सो इस मेथड को मैंने इजी बनाने के लिए, एक होता है ओमनी कैलकुलेटर. यू विल गेट इट ऑन गूगल ऑनलाइन. ठीक है? Please everybody note down Omni calculator. Omni calculator से क्या करोगे आप? You will go today and tomorrow या any time and put, it will keep telling you what to do. उसमें सब add करते जाओगे, your inches and everything. Okay? उसके लिए you'll need a tape. So get a normal tape
measuring tape from the market, order it. Blinkit पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा. Zepto, Blinkit. Just order it and place it. Now, when you take it around, circumference आप पूरा लोगे around, make sure your one finger goes inside and then you hold it. तब measure होता है. Upper chest लिखो, क्या क्या measurements लोगे? Shoulder, like this across. ऐसे tape रखोगे shoulders across. Upper chest लोगे measurement. Waist and hips. These are your basic measurements that they will ask in the Omni calculator. तो calculate करके उसमें लिख के रख लेना and then just open the calculator, put all the reading in it and it will tell you what is your body shape. Is the process easy or not? Easy? Next. Please switch off all the, please mute yourself everybody. Got it everyone how to calculate? ठीक है? Now let's come to face shapes. अब face shapes मैं क्यों सिखा रही हूँ? Because sometimes people do not know किस face shape पे कौन सी jewelry या accessory आप पहन सकते हो. So it is not only related to pageantry, you can apply it in pageantry, but it will help you in future as well throughout your life. Okay? Oval face shape सबसे balanced face shape होता है. Okay? Which means उस पे सारे type की jewelry suit करती है, सारे type के hairstyle suit करते हैं. Next आता है square face shape. Now you can see they've made it. Look at the shading. Square में क्या है? ये पूरा oval almost round type ही हो जाता है ना? It's a thinner version of a round face shape, more of an egg shape. Egg shape का होता है oval shape. Okay. Now इसमें क्या होता है? Square में क्या है? आपके cheek bones well defined होते हैं square में. Okay. So आपके already angles बने होते हैं. अब जैसे आप लोग makeup करते हो, है ना? Makeup में क्या करते हैं? What do we use to create angles? क्या करते हो use? बताओ. Contouring. Contouring. अब contouring stick से लेके आपने सारा वो तो कर दिया face. But if your face is an oval face, why do you require contouring? Makeup artist सबके face पे contouring कर देते हैं. But contouring का भी एक balanced way होता है according to understanding the face shape. So a square face shape, because it's a square, उसको oval बनाने के लिए soft कैसे करोगे? आप sides को cut करोगे, है ना? तो तब यहाँ पे soften करोगे उससे contouring stick से. To get it closer, so this is the ideal face shape होता है आपका oval. Oval से closest लाने के लिए अपने face shape को आप balance करोगे. Yes. Next comes round. Round is बिल्कुल ही round जैसे होता है like a circle. उसको बैलेंस करने के लिए भी आप एंगल्स दोगे. यस, लिटिल बिट ऑफ एंगल्स. चीक पे नीचे अवॉइड करना बिकॉज एनीवेज इट हैज अ राउंड, इट्स लाइक अ क्रिसेंट. ओनली चीक्स विल बी ओके कॉन्टोर्ड, नॉट द लोअर हाफ. स्क्वायर में यहां पर सॉफ्टनेस क्रिएट करोगे आप. ठीक है. नाउ डायमंड फेस शेप में क्या है? डायमंड फेस शेप में भी आप क्या करोगे? You will balance. अब now when we talk about accessories, हाँ, अपनी जो भी accessory जैसे आपका face shape है, जो भी आपको लगता है आपका face shape है, उसको भी आप Omni calculator में down कर सकते हो. There is a way you can go and read it and do it if you can understand. I'll also try and see if I can help you next time with it. Okay? But जैसे आप jewelry पहन रहे हो, अगर आपका oval face shape है तो हर type की jewelry चलेगी. If you have a square face shape, square में आप फिर स्क्वायर ज्वेलरी नहीं पहनोगे. यू विल नेवर रिपीट द शेप ऑफ योर फेस इन एक्सेसरी. समझ गए कि नहीं समझे? डू नॉट रिपीट द शेप ऑफ योर फेस इन. प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन द स्लाइड्स. थैंक यू. ओके. अब राउंड फेस है तो आप राउंड इयररिंग्स नहीं पहनोगे, हुप्स नहीं पहनोगे. यू कैन वेयर रेक्टेंगल, यू कैन वेयर लॉन्ग earrings, okay, danglers,
or you can wear square. So you will not repeat the same face shape. Please note it down as your face shape. It should be different from your face shape. वरना क्या होता है, क्यों नहीं रिपीट करते? अगर राउंड फेस पे राउंड इयररिंग्स पहनूं तो फेस और राउंडेड 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 नहीं लगेगा? यहां भी राउंड, यहां भी राउंड, तो राउंडनेस और इनहैंस होएगी. गॉट इट? इसीलिए यू विल वेयर अ स्क्वायर, यू विल वेयर अ रेक्टेंगल, यू कैन वेयर डैंगलर्स. उसी हिसाब से अपनी ज्वेलरी चूज करना फॉर योर मेन डे. अब डायमंड फेस शेप का आप डायमंड का कुछ नहीं पहनोगे, डायमंड या स्क्वायर, आप पहनोगे राउंड. ओके, टू फिल इट अप, टू फिल अप द लोअर फेस. राउंड जैसे इयररिंग्स पहन लिए या हुप्स पहन लिए. रेक्टेंगुलर फेस शेप. अच्छा, मेरा फेस शेप क्या है? कोई किसी को आइडिया लग सकता है देख के? Ma'am, I think yours is rectangle. Mine is a rectangular face shape. Rectangular face shape, I don't have any jewelry piece which is square or which is a rectangle or a diamond, because diamond, as in I mean in the shape of a diamond, because I already have angles, so I cannot wear anything more angular. मेरा face बहुत harsh लगेगा. To make it look softer, I have to wear something round. It looks softer. So it will be in opposition from my face shape. मेरा अगर rectangle है तो मैं round पहनूंगी, it will look better on me. Got it? That is how you say that never repeat the same shape as your face shape. And lastly, we talk about a heart face. Heart face shape का क्या होता है? ऐसे हेयर का जो हेयर लाइन होती है वही हार्ट शेप में होती है, उससे पता चल जाता है इट्स हार्ट शेप फेस. और नीचे से थोड़ा राउंडेड सा होता है. ओके, सो हार्ट शेप फेस शेप पे भी आप राउंड या आप स्क्वायर या रेक्टेंगल या डायमंड फेस डायमंड शेप यूज कर सकते हो. गॉट इट एवरीवन? आई होप एवरीबडी इज मेड अ नोट ऑफ दिस. So for today, our session is going to be only till here. Okay. Now I'm going to take, I'll just stop the share. Yes, welcome back. Now I'm going to take some questions from you all. Anything you have on your mind that, ma'am, I want to learn this, I want to understand this, please feel free before we end the session. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, what is the minimum height of heels to wear during stage? See, usually a minimum length of the heel is 3 inches, which is there in international pageants. अब आपको अपने pageant से पता करना होगा, ठीक है ना? Find out from your pageant कि कितनी minimum होनी चाहिए. And it's a request, people, please practice in your heels only. जो main day पे आप heels पहनोगे, वरना आप नहीं walk कर पाओगे. You will not gain confidence to walk confidently. Okay? So ये सारी चीजें आपकी place पे होनी चाहिए. Please take the pageant seriously. Seriously मतलब enjoy भी करो, but अगर आप hard work नहीं डालोगे तो pageant में आने का फायदा क्या होगा? Challenge yourself, stretch beyond your limits and see that where you can achieve or where you can life can take you. You never know. Yes, I hope you got your answer, Yashasvi. Find out from them, and every person will order or get the heels and practice in the heels that you're going to wear for the main day. तभी आप comfortable confident walk पे चल पाओगे. Got it everyone? Anybody else for any question? Yes, ma'am, I have a doubt. Please. Ma'am, हमें like when we like communicate, तो we need a fancy word to speak, because I'm really struggle with like to using fancy words. So see, words do not have to be fancy. You have to use the right words. हमने शशि थरूर थोड़ी बनना है. Nobody is choosing you कि शशि थरूर की तरह कौन बोल सकता है, वो ही फर्स्ट आएगा. आपने किस इमोशन में, किस प्रेजेंस में, किस बॉडी
फॉर्म में आंसर करा और कितने कॉन्फिडेंस से अपना आंसर डिलीवर करा है, वो ही पैजेंट विनर होगा, वो ही चूज होएगा। जिसमें वो कॉन्फिडेंस, वो पॉइज होगा, somebody who can answer very well and answer on the spot। और आंसर ऑन द स्पॉट का मैंने क्या बताया, स्पॉटलाइट इफेक्ट, है ना। स्पॉटलाइट इफेक्ट और फियर मत क्रिएट होने दो। यू विल इमर्ज योरसेल्फ एज अ विनर एंड यू विल रियलाइज दैट ओ गॉड, आई डिड नॉट नो मेरे में इतनी अनटैप्ड पोटेंशियल पड़ी है दैट आई कैन स्टैंड अप एंड स्पीक। There was a time, truly, when I could not stand up and speak and words would choke in my throat. मुझे आंसर पता होता था क्लास में, but I knew all the answer, but I could not raise my hand and speak because confidence नहीं था. Today, I train celebrities, I train all pageants. अभी recently, I was invited on India Today for an expert talk along with the CM of Delhi, actress Bhumi Pednekar, है ना। तो सब बिग बिग लोगों के बीच में भी जाते हुए मुझे भी लग रहा था थोड़ा, ओ गॉड कैसे करूंगी, बट यू हैव टू पुश योरसेल्फ। ओनली इफ यू टेस्ट योरसेल्फ। आई कुड नॉट इमेजिन दैट आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट, वहां से मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ। इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ ऑल द इयर्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना। तो प्रैक्टिस और हार्डवर्क डालो, रोज प्रैक्टिस करो, स्टैंड अप एंड प्रैक्टिस एवरी डे। अपना ये टाइम निकालो, 1-2 घंटे मुझे रोज प्रैक्टिस करना है, सो दैट इवन द पैजेंट के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता है इन डे पे। अगर आप लोग खुद ही अनप्रिपेयर्ड हो तो पैजेंट एक एक के पास जाके क्या कर लेंगे। हाउ कैन दे मेक इट वर्क? मेक द वर्क लाइटर। यस, हाउ डू दे यू मेक द वर्क लाइटर? बाय हेल्पिंग ईच अदर, बाय बीइंग देयर फॉर ईच अदर, गाइडिंग ईच अदर। compete मत करो, compete करो in the pageant, on the pageant day, but as human beings to be there for each other. Yes or no? Yes, ma'am. Sushmita Sen also, before going for Miss Universe finale, finals, I don't know what country it was in, I'm forgetting. उस country की जो girl थी सुष्मिता did not have any earrings to wear. She opened up all her accessories and said, Sushmita, you can choose whichever you want. She said, Sushmita asked her, which one will you wear? She said, no, you are in my country. I want to, be there for you and serve you. You choose accordingly. First you pick, then I will pick. कितनी बड़ी बात है, कोई करेगा for the main pageant? कोई नहीं करता. It shows that the girl was so full of etiquette, so full of respect and love. उसने compete नहीं करा. You understand? And Sushmita Sen thanked and returned her earpieces when she won. She said, no, this is a blessing for you. It's good luck for you. Please take it with you. Can you believe it? Be like that with each other. Pageant पे भी भार मत डालो. I always tell you कि otherwise इतने pageant बेचारे organize करने में frustrate हो जाते हैं because आप लोग सब इतना stress देते हो. सोचो, so many of you and they have to manage other things and organize for you all only. So you can lighten the burden by being prepared. Be proactive. Proactive क्या होता है? पहले से ही preparation इतना अच्छा आप करो कि वो तंगी ना हो एंड में। Your clothes should always be on point. अपने clothes पहले beforehand ready करो। Last day सोचो pageant stage पे आप जा रहे हो, बोलो ओहो मेरे कपड़े की ये this is torn, this has happened, oh God ये fitting। तो you think you can stand up on stage and answer? No, you can't. अगर 2 लोग रेस में भाग रहे हैं और एक साथ वाले को देखने के लिए टर्न भी करता है फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए, he will lose the race because दूसरा आगे निकल जाएगा। Similarly, when you're competing, everything should be in place so that your only presence, your focus should be on presence and delivering your best on your main day. Yes, everyone? Yes, ma'am. Any more questions for today? Thank you, ma'am. Ma'am, I have. Sorry? Ma'am, Yes, please go ahead, Niharika. When I have a public sphere, like public speaking sphere, and I'm also working on this. But कभी कभार मतलब मेरा माइंड ब्लैकआउट हो जाता है या मेरी बॉडी स्टार्ट पैनिकिंग, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ उस टाइम पे? निहारिका, आपने सेशन अटेंड करा है आज का या नहीं करा? मैम किया तो है, बस उस सिचुएशन के उस टाइम पे उसको कैसे मतलब हैंडल किया जाता है। उसी का ही बताया। हु इज गोइंग टू आंसर? चलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आई वांट टू सी कौन आंसर करेगा यहाँ से।
हेल्प निहारिका, शी इज योर फ्रेंड ओनली, कम ऑन। सब चुप हो गए। You should practice and practice more. That is the only way you can conquer your fear. Yes, and first and foremost, get into the habit of practicing daily, जो मैंने बताया. And secondly, box method breathing. Thirdly, shaking your entire body to release all excess energy out of your body. Yes, ये 3 मेथड्स आप फॉलो करोगे. पावर पोज बताया, कितनी चीजें. आज तो पूरा मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी इसलिए दिया है कि कल को आप पैजेंट को स्ट्रेस ना दो, इसलिए वो स्ट्रेस मैंने अपने ऊपर ही ले लिया कि चलो मैं ही हैंडल कर देती हूँ ये सारा. हाँ निहारिका, गॉट इट? Yes, ma'am. Thank you. ठीक है, प्रैक्टिस इट. नहीं समझ आएगा अगली बार आई टेक इट अप अगेन, डोंट वरी. यू ऑल कैन आस्क मी zillion of questions. I love answering questions because I'm here to help you and make you win. Okay? So please डरो मत कि मैम को लगेगा. There is no question which is wrong. And I tell this to senior leaders because उनको लगता है वो इतने एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे, अरे if we'll ask a question she'll think कि अरे हमको नॉलेज नहीं है. I tell them no sir, it's okay, because there is no question for a coach which is wrong. Every question is a right question. Okay? So don't have that fear. मैं मैम से क्वेश्चन पूछूंगी, अरे बेवकूफी तो नहीं करूंगी, सब मजाक तो नहीं उड़ाएंगे. नो, यू आर हियर टू मेक योरसेल्फ विन. भर भर के क्वेश्चंस लिखो, बट सेंसिबल क्वेश्चंस related to the pageant, है ना? Okay, everyone. Any other question before we end? One more question I'll take up, anybody, if anybody has. Good. Now, before we end the session, one of the most important key takeaways for you all is practice, practice, practice. Niharika, fishbowl method. रोज खड़े हो, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर. मेरा पोस्चर कैसे है? एम आई लुकिंग लाइक अ विनर? वेयर योर गाउन, वेयर योर हील्स एंड वॉक. इट विल गिव यू अ फीलिंग. फिश बोल मेथड को बताया है. रोज थिंक यू होल्डिंग अ माइक, पिक अप अ चिट, ओपन. अमिगडाला हाईजैक नहीं होगा आपका. यू विल नो हाउ टू ओवरकम दैट नर्वसनेस. निहारिका, आज मैंने सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही करा है निहारिका. सो प्लीज रिमेंबर एंड मेक नोट्स. नहीं है तो किसी से हेल्प लो एंड आस्क देम कि क्या क्या लिखा है. ओके, प्रैक्टिस दिस एंड आई अश्योर यू, यू ऑल विल डू एन अमेजिंग जॉब. डोंट वरी हु इज गोइंग टू बी द विनर, क्योंकि उससे भी फियर और स्ट्रेस क्रिएट होता है. जस्ट टेल योरसेल्फ आई एम हियर टू गिव माय बेस्ट. दैट इज इट. ओके, all of you are winners because you're here, you have come here so far. That in itself is something you should. चलो pat yourselves on the back, all of you. जल्दी फटाफट with me. शाबाशी दो अपने आप को, है ना? To be here, वो ही अपने में बहुत बहुत बड़ी चीज है. Okay? God bless you all. Have a wonderful evening ahead and lots of love from my side. Okay? And I sign Thank off you, for ma'am. the evening. Thank you, ma'am. Thank you All so the much, very ma'am. best. Thank you so much. Lots of Thank love you, to ma'am. each one of you. Practice and we'll take up question. I'll explain to you about questions also for next time. Don't worry. ठीक है, question round में कैसे आप handle करोगे questions. All the best. Take care. Have a wonderful evening ahead. All the best. Bye-bye. Thank you so much, ma'am, for Thank you. taking You're Thank you, very ma'am. welcome. Thank you. Thank you so much. तो आज का सेशन खत्म हो गया. आप सभी लोग लीव कर सकते हैं. Bye, ma'am.